At the end of the year, the goods left unsold are called dash. Option A, closing stock. Option B, opening stock. Option C, work in progress. Option D, none of these. इस क्वेश्चन का सही आंसर है at the end of the year the goods left unsold are called closing stock. Option A is the correct answer. Byproducts should be valued at option A, cost. Option B, net realizable value. Option C, cost or net realizable value, whichever is less. Option D, cost or market value, whichever is less. इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाय प्रोडक्ट्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन. Which attribute should be used to measure damaged inventory? Option A, historical cost. Option B, net realizable value. Option C, current market value. Option D, current cost. इस क्वेश्चन का सही आंसर है option B, net realizable value. Option B is the correct answer. Closing stock is generally valued at dash. Option A, cost price. Option B, market price. Option C, cost price or market price, whichever is higher. Option D, cost price or market price, whichever is lower. इस क्वेश्चन का सही आंसर है closing stock is generally valued at cost price or market price, whichever is lower. Option D is the correct answer. During a period of steadily falling prices, which of the following methods of measuring the cost of goods sold is likely to result in reporting the highest gross profit? Option A, first in first out. Option B, last in first out. Option C, highest in first out. Option D, average cost. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. During a period of steadily rising prices, which of the following methods of measuring the cost of goods sold is likely to result in reporting the lowest possible taxable income? Option A, average cost. Option B, weighted average cost. Option C, first in first out. Option D, last in first out. इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The appropriate method of valuation of the items which are not easily interchangeable is dash. Option A, FIFO method. Option B, specific identification method. Option C, weighted average method. Option D, LIFO method. इस क्वेश्चन का सही आंसर है the appropriate method of valuation for the items which are not easily interchangeable is specific identification method. Option B is the correct answer for the given question. Which of the following system of inventory valuation computes the cost of goods sold as a residual amount? Option A, periodic inventory system. Option B, perpetual inventory system. Option C, specific identification. Option D, weighted average. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ अ बिजनेस इज अंडर कॉस्ट, इट विल option A, increase gross profit and decrease net profit. Option B, increase gross profit as well as net profit. Option C, decrease gross profit as well as net profit. Option D, none of these. इस क्वेश्चन का सही आंसर है if the closing inventory of a business is under cost, it will decrease gross profit as well as net profit. Option C is the correct answer. The retail inventory method for the determination of historical cost of inventories may be used only. Option A, for inventories of items that are not ordinary interchangeable. Option B, for goods manufactured and earmarked for a specific purpose. Option C, where the use of such a method would approximate the results obtained through LIFO, FIFO or average cost method. Option D, where inventory comprises of items for which individual costs are not readily ascertainable. इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द रिटेल इन्वेंट्री मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज मे बी यूज्ड ओनली where inventory comprises of items for which individual costs are not readily ascertainable. Option D is the correct answer. Valuation of inventory is dealt within which accounting standard? Option A, accounting standard 5. Option B, accounting standard 2. Option C, accounting standard 3. Option D, accounting standard 4. इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज डेल्ट विद इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज यूज्ड वेयर. ऑप्शन ए, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर मटेरियल्स फॉर रेगुलर इंटरवल्स.
Option B, exercising control over the issue of materials. Option C, recording the receipts and issue of materials immediately after each transactions. Option D, none of these. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज यूज्ड वेयर recording the receipts and issue of materials immediately after each transactions. Option C is the correct answer for the given question. Inventories are assets. Option A, held for sale in the ordinary course of business. Option B, in the production process for such sale. Option C, in the form of materials or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of service. Option D, all of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D, all of the above. Option D is the correct. Which method of inventory valuation is widely accepted by income tax authority? Option A, LIFO method. Option B, FIFO method. Option C, adjusted selling price method. Option D, specific identification method. इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, FIFO method. First in, first out method. Option B is the correct answer. Inventory valuation does not affect dash. Option A, tax liability. Option B, net income. Option C, cash flow statement. Option D, none of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C, cash flow statement. Inventory valuation does not affect the cash flow statement. Option C is the correct answer. Calculate the value of purchase through following details. हमें क्या पता लगाना है वैल्यू ऑफ परचेज और कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं जिसमें से पहला है ओपनिंग स्टॉक 20,000 का था, सेल्स 1,50,000 का था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑफ सेल था और क्लोजिंग स्टॉक जो है 30,000. ठीक, तो वैल्यू ऑफ परचेज क्या होगा? वी हैव फोर ऑप्शंस. पहला ऑप्शन 1,30,000, दूसरा 1,40,000, तीसरा 1,50,000, चौथा ऑप्शन 1,60,000. इस वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं और सही आंसर को आप कमेंट कर सकते हैं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1,30,000. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इफ द एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 24,000 रुपीज, मतलब 24,000 का आपका एवरेज स्टॉक रहता है. क्लोजिंग स्टॉक इज 6,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक. द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू डैश. ठीक है, पहला ऑप्शन 27,000, दूसरा ऑप्शन 26,000, तीसरा ऑप्शन 21,000 और चौथा ऑप्शन 28,000. इस वीडियो को पॉज करके इसे कैलकुलेट करके आप सही आंसर कमेंट कर सकते हैं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 21,000. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस फीफो मेथड विल लीड टू डैश. ऑप्शन ए, लोअर प्रॉफिट्स. ऑप्शन बी, हायर प्रॉफिट्स. ऑप्शन सी, हायर सेल्स. ऑप्शन डी, लोअर सेल्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस फीफो मेथड विल लीड टू higher profits. Option B is the correct answer for the given question. Physical inventory system is also known as dash. Option A, perpetual inventory system. Option B, periodic inventory system. Option C, inventory record system. Option D, none of these. इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. When FIFO method is in use, FIFO मतलब first in first out, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड है. ठीक है, जब हम इसे यूज कर रहे हैं द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट डैश. ठीक है, पहला ऑप्शन ओल्डेस्ट प्राइस पेड, दूसरा ऑप्शन प्राइस फर्देस्ट फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रीवेलिंग मार्केट प्राइसेस, चौथा ऑप्शन है रीसेंट कॉस्ट पेड. इस क्वेश्चन का सही आंसर है when FIFO method is in use, the closing inventory is valued at the recent cost paid. Option D is the correct answer for the given question.